हेलो पे मैंने गुड मॉर्निंग एंड जय जगन्नाथ। आज मु 12th फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करिया जाउची। तुमे मैंने भाबुथिबो 11th मोर सरीगला 12th एबे स्टार्ट हे जीवनी सब जगह रे। तो 12th फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स रो मु स्टार्ट करिवि। फिजिक्स तुम 12th टिके डिफिकल्ट लागुथिबो किंतु तमे कोचिंग जाउथिबो स्कूल जाउथिबो विभिन्न जगह रे पढुथिबो तथापि भी तुमको डिफिकल्ट जदि लागुची ताहले तमे मो वीडियो यूट्यूब रू देखि परिबो। प्रत्येक सप्ताह रे मो गोटे की दुईटा वीडियो छाड़ीबी आ सबु वीडियो रो एक्सप्लेनेशन कंप्लीटली ओडिया रे रहिबो। तो एई जो नुवा चैनल मु तयारी करची एटा CHSE पिलांग पई CBSE पिलांग पई कि एवं जेई नीट जो माने दउचो तो सिस्टमैटिकली आमे गोटे चैप्टर पर गोटे चैप्टर करी करी जिबा। आ तमे वीडियो देखिले तमे कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट द सब्जेक्ट तुमको मिलिबो। तो फर्स्ट मु बोर्ड बढ़िया CHSE CBSE बोर्ड रो पूरा कोर्स कवरेज करी। तापरे नेक्स्ट गोटे चैप्टर सरीगला परे तार जेई नीट रिलेटेड कांसेप्ट आ तार प्रॉब्लम आमे एटी देखिबा। तो प्रति 2-3 दिन रे गोटे वीडियो आसीबो। वीडियो लेंथ पाखापाखि गोटे घंटा हबो। तो प्रथमे तमे गोटे वीडियो देख आ जदी तुमको भलो लागुची ताहले तमे लाइक शेयर करिवो आ मो चैनल को सब्सक्राइब करिवो। तो मो चैनल ना मु दे देछि पीएन फिजिक्स प्रदीप नंदा एंड मो कांटेक्ट नंबर अच्छी जदि जहार को भी डाउट अच्छी से माने व्हाट्सएप रे पठेई परिबो। मते व्हाट्सएप रे पठेइले तमे मे बी इमीडिएटली तमे जदि रिप्लाई न पाई परिबो किंतु मु देखिला पर मेसेज निश्चय तमरो डाउट क्लियर करिवि। तो आज 12th रो कोन कोन चैप्टर अच्छी मु फास्ट लिखि दउची। तापरे आज आमे गोटे चैप्टर गोटे घंटा भीतर गोटे चार्ज रो कांसेप्ट आमे आज सारीबा। तो जो माने भाबुचो तमरो 11th बर्बाद हो गला 11th रे किछि पढ़ी न सेटा भूली जाओ पछ कथा भूली जाओ पछ कथा भूली जाई नुवा 12th ऊपर कंसंट्रेट कर। तो निश्चय बहुत टाइम अछि तुमको पाखा पाखी 10 मास मिलिबो 12th पई। से 10 मास परिश्रम कले तमे बहुत भलो रे रिजल्ट करि परिबो आ पर्टिकुलरली फिजिक्स रे तमे फुल आंसर देई के आसी परिबो। 70 आउट ऑफ 70 क्वेश्चन आंसर देई के आसी परिबो। तो हमर 12th रे फर्स्ट एनसीईआरटी रा दुईटा बुक्स अछि। फर्स्ट बुक से 17 चैप्टर सेकंड रे 6 to 7 चैप्टर्स अछि। तो आमे समस्ते से CHSE पिला होंतु कि CBSE पिला होंतु समस्त को मु प्रिस्क्राइब बुक कहबी एनसीईआरटी बुक। समस्त पाखरे एनसीईआरटी रा दीटा बुक 1 एंड बुक 2 रहिबा दरकार। मु फर्स्ट एटी चैप्टर्स बुक 1 रा फर्स्ट चैप्टर लिखुची तापरे मु 12th रा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करिवि आ पाखापाखि 1 आवर भितर मु चार्ज रो पूरा कांसेप्ट पूरा चार्ज रो सार देबी। तो ठीक अछि कोन कोन चैप्टर अछि हमरा 12th रे। तो 12th रे एनसीईआरटी 12 बा CHSE सेकंड ईयर CHSE सेकंड ईयर सब पिला देखि परिबो जो माने ओडिया बुझी परुछ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ओडिया रे रहिबो सेकंड ईयर। तो फर्स्ट चैप्टर होची मोरा चार्ज। फर्स्ट चैप्टर होची चार्ज फोर्स एंड फील्ड। चार्ज फोर्स एंड फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर 2 चैप्टर होची पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। थर्ड चैप्टर होची मोरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी 11th रे जा हेई जाईची बा फर्स्ट ईयर रे जा हेई जाईची से विषय न भाबी कि आमे 12th रे स्टार्ट करिवा आ बहुत भलो रिजल्ट करिवा। तो करंट इलेक्ट्रिक। फोर्थ चैप्टर होची मोरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बेसिकली बुक 1 रहिबो तमरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चैप्टर 5 रहिबो मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म। चैप्टर 6 रहिबो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर 7 रहिबो EMI या को कहूची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और EMI।
तो चैप्टर 7 रहिबो अल्टरनेटिंग करेंट, अल्टरनेटिंग करेंट। चैप्टर 8 रहिबो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एई 8टा चैप्टर अछि हमर बुक 1 रे, एनसीईआरटी बुक 1 रे। आउ एंटर एनसीईआरटी हमें कवर करिबा, तापरे जेई आउ नीट पई कि कोन कोन बुक्स दरकार कोन मु सेटा तो मन को कहिबी। तो आज एई 8टा चैप्टर हमर बुक 1 रे अछि, सेमती 6 to 7 चैप्टर्स अछि। आउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर हमें एबे कवर करिबा। Electrostatics, electrostatics। Okay, so electro means basically charge, charge, statics means rest, rest। so आमे जतले कहबा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे चार्ज रेस्ट रे रहिबो, चार्ज मूवमेंट करिवनी। चार्ज रेस्ट रे रहिबा जो फेनोमेना हबो ताको आमे पढिबा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे आमे दीटा चैप्टर पढिबा। फर्स्ट चैप्टर रे आमे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स विषय पढिबा। आउ सेकंड चैप्टर रे आमे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस विषय पढिबा। तो एई जो दीटा चैप्टर आमे पढिबा, ए दीटा चैप्टर रे चार्ज विल बी एट रेस्ट, चार्ज रो मूवमेंट हबो नाही। क्लियर हैला समस्तंकर? चार्ज रो मूवमेंट हबो नाही। तो चार्ज रो मूवमेंट न हवा जोगु, चार्ज रेस्ट रे रहिबा जोगु कोन कोन कांसेप्ट हमर होउची, कोन कोन फेनोमेना होउची, सेटा जो आमे पढिबा ताकू कहिबा आमे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सो बुझियला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कोन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ द चार्ज एट रेस्ट। तो लिखि दबा ता डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रो। इट इज, खाता पेन बाहर करो, सब खाता पेन बाहर करी लिखी चलो। इट इज द ब्रांच, it is the branch of physics, it is the branch of physics which deals with, which deals with charge at rest, charge at rest, charge at rest। so charge रेस्ट रहिबा जोगु जो जो फेनोमेना हबो सेटा हमें पढिबा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे। तो से जो चार्ज एट रेस्ट रो फर्स्ट चैप्टर एटा बुझी पाइला समझते। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कोन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स माने हैला चार्ज एट रेस्ट, चार्ज रो मूवमेंट हबो नाही। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 रे चार्ज रो मूवमेंट हबोनी। चैप्टर 3 जतो हमें पढिबा करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेठी जाई कि चार्ज रो मूवमेंट हबो। तो पॉज करी लिखि दियो एति कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ द चार्ज एट रेस्ट। अच्छा, वन पॉज करी लिखि देला। अच्छा, एबे जिबा आमे कोन चैप्टर 1 रे अछि। सो चैप्टर 1 हमर हैला, चैप्टर 1 रे आमे चार्ज एट रेस्ट रे आमे दीटा चैप्टर पढिबा। सो गोटे चैप्टर हैला चार्ज, चार्ज विषय फर्स्ट चैप्टर रे पढिबा चार्ज। ओके, देन फोर्स, then field, electrostatic force and electric field। then chapter 2 रे पढिबा आमे potential and capacitance, potential and capacitance, potential and capacitance। तो ए दिटा हमें पढिबा। फर्स्ट चैप्टर 1 अब चार्ज विषय पढिबा, फोर्स विषय पढिबा एंड फील्ड विषय पढिबा। तो चैप्टर 1 टा टिके बड़ चैप्टर और चैप्टर 2 टा टिके छोटो चैप्टर इन कंपैरिजन टू चैप्टर 1। तो एबे हेडिंग करिबा हमर फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर कोन ना? चार्ज, फोर्स एंड फील्ड। ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एटा हमर चैप्टर 1 बुझियला समस्तंकर। तो एबे हमें हेडिंग बनाओ चार्ज, फोर्स एंड फील्ड। फर्स्ट हेडिंग बनाओ चार्ज। तो चार्ज माने कौन? सब कांसेप्ट हमर क्लियर हबा बिट बाय बिट, गोटी गोटी के सब कांसेप्ट क्लियर हबा एथिरे। तमे यदि वीडियो मूलरो शेष पर्यंत देखिबो गोटी गोटी कांसेप्ट क्लियर हबा चार्ज विषय रे। आज हमें चार्ज विषय रे टिके डिस्कशन करिबा। तो चार्ज ता कोन? हेडिंग करो चार्ज। चार्ज ता कोन?
तो मु जतबे कहूची एटा गोटे मार्कर ए मार्कर रो तो मु कहबी ए मार्कर रो मास अछि ए मार्कर रो मास को मु बाहर करि पारिबी कि बिना मास रे मोर मार्कर एग्जिस्ट करिवो कि करिवो नाही सो मास इज द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर तो ए मार्कर रो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ भीतर मास भरी भरी के रहिची एटू मो मास बाहर करि पारिबी नाही सेमिति चार्ज charge is also an inherent characteristics of any matter charge ता inherent characteristics matter रो चार्ज को मु अलगा करि परिबिनी मैटर रु गोटे ऑब्जेक्ट ए मार्कर रे भी मोर चार्ज रहिछि ए मार्कर रे भी चार्ज रहिछि चार्ज भरी भरी के रहिछि तो एटा चार्ज ता माने इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर तमे कहबो जदी भरी भरी के रहिछि ताहाले जणा काई पडुनी ना एटा चार्जिंग हेइनी सेति पई जणा पडुनी ता माने व्हाट डज इट मीन चार्जिंग हेइनी ता माने होउछि एथिरे जेतेकी इलेक्ट्रॉन अछंती सेतेकी प्रोटॉन अछंती जेतेकी पॉजिटिव चार्ज अछंती सेतेकी नेगेटिव चार्ज अछंती तो सो एटा न्यूट्रल ता माने नय जे आधे चार्ज नाहंती आधे चार्ज अछंती जोडा कि मु अलगा करि परिबिनी चार्ज माने जेतेकी इलेक्ट्रॉन अछंती सेतेकी प्रोटॉन अछंती तो सेथे पई कि एटा गोटे न्यूट्रल एटा मते जणा पडुनी बा एटा किछि मते शॉक मारुनी बा किछि फोर्स अप्लाई करू नाही ता माने चार्ज जेम मास रो डेफिनेशन कहूची मास इज द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर सेमिति चार्ज इज आल्सो द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर मैटर रे भरी भरी के चार्ज रहिची जोडा कि मु मैटर अलगा करि परिबिनी एई ऑब्जेक्ट रो कोन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब अलगा करि परिबी नाही ठीक अछि बुझी पाइलो पूरा क्लियरली तो एबे लिखिबा चार्ज कोन ना चार्ज होची इट इज द इनहेरेंट characteristics inherent characteristics of matter inherent characteristics of matter माने एथिरे चार्ज मोर भरी भरी के रहिछि चार्ज अलगा करी हबो नै चार्ज भरी भरी के रहिछि माने जेतिके इलेक्ट्रॉन सेतिके प्रोटॉन रहिछन्ती ओके तो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर बुझियला प्रथमे चार्ज ता कोन ताले चार्ज केते प्रकार charges are of two types one is positive charge another one is negative charge okay so lekhiba it is the inherent characteristics of matter तो एबे लेखिबो चार्जेस आर मु जेत्ते के लेखिबी सेत्ते के तमे नोट्स बनेइबो ताठो अधिका नोट्स बनेबा दरकार नै कि ताठो अधिका किछि बुक्स फॉलो करिबा दरकार नै तेनु चार्जेस आर ऑफ two types charges are of two types one है positive charge और number one है positive charge number two है negative charge तो एते कि जानि छ चार्ज दी प्रकार गोटे है पॉजिटिव आ गोटे है नेगेटिव ओके बुझि होछि तो नेक्स्ट टाइम जीबा एबे देखो मु कोन कहूछि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स वन इज पॉजिटिव अनदर वन इज नेगेटिव तो आ गोटे पॉइंट लिखि दउछि मु तमे जानि छ जदि सेम चार्ज रहिबो ताहाले से माने रिपेल करिवे दूरे जिवे रिपेल करिवे सेम चार्जेस रिपेल इच अदर ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर जदि ऑपोजिट चार्ज रहउछि से माने अट्रैक्ट करूछन्ती जदि सेम चार्ज रहउछि ताहाले से कोन करिवे रिपेल करिवे बुझि होउछि तो देखो मु कोन कहली तो मु सेम चार्जेस repel each other माने पॉजिटिव जदि अछि प्लस प्लस अछि रिपेल करिवे कि माइनस माइनस थिले भी दे विल रिपेल ओके जदि प्लस माइनस अछि ऑपोजिट चार्जेस attract each other जदि मोर प्लस माइनस अछि किमा माइनस प्लस अछि से कोन करिवे अट्रैक्ट करिवे सो दे विल अट्रैक्ट each other तो सेम चार्जेस रिपेल each other ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट each other एते कि बुझि पाइलो धीरे धीरे हमें जीवा कांसेप्ट को डोंट वरी तो फर्स्ट मु कहली चार्ज कोन चार्ज एला दी प्रकार ठीक अछि
तो चार्ज सेम चार्जेस रिपेल इच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर. तो पॉज करी नोट कर दियो. लिवी दूची. अच्छा. So some points I will write that you call it electron theory. ताको कहवा कि हम किसी पॉइंट्स कहबी जोड़ा कि तमे मन रखिबा जोड़ा कि चार्ज पाई कि मोर दरकार. तो सम पॉइंट्स किछिटा पॉइंट्स मु कहबी चार्ज विषय 1 2 3 करी बा तुमको बहिरे सेटा इलेक्ट्रॉन थ्योरी देइछि किंतु मु इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहनी सम पॉइंट्स अबाउट द चार्ज. ओके सो सम पॉइंट्स अबाउट द चार्ज. सम पॉइंट्स अबाउट द चार्ज किछिटा पॉइंट्स अबाउट द चार्ज मु लिखिबी 1 2 3 करी तमे सेटा को भल से मन रखिबो. ता माने सम पॉइंट्स अबाउट द चार्ज. तो मु जेतले गोटे एटम कहूची एटम रो न्यूक्लियस रे मोर प्रोटॉन आ न्यूट्रॉन थांती आ इलेक्ट्रॉन ता चारि पटे घुरुतांती. एटा तो समस्त जानिछो. ता माने an atom consists of a nucleus. First point, an atom consists of a nucleus and which contains proton and neutron, which contains proton and neutron and electrons are revolving around it. तो आ माने कोन तो गोटे एटम रहिला एठी रहिले प्रोटॉन आ न्यूट्रॉन. सो ता चारि पटे किए बुलिले इलेक्ट्रॉन सब बुलुचन. इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. जेमति कि धर मु कहली सोडियम तने जानिछ सोडियम रा एटॉमिक नंबर हैला 11. ओके सो सोडियम रे 11 टा प्रोटॉन अछंती 11 प्रोटॉन अछंती आउ ता चारि पटे 11 टा इलेक्ट्रॉन बुलुचंती. सो 2 तापरे 8 2 2 4 2 6 2 8 तापरे आ गोटे. So 11 electron. So this is the atomic configuration of sodium. बुझियला. तो एठी 11 टा प्रोटॉन अछंती 11 टा इलेक्ट्रॉन अछंती 11 प्रोटॉन टा कोडी अछि न्यूक्लियस रे अछि आउ 11 टा इलेक्ट्रॉन तो चारि पटे बुलुचंती. बुझियला समस्त हमरा ना कार डाउट्स अछि. डाउट्स ले कमेंट्स दबा. ठीक अछि. तो एते की बुझि पारलो. तो एन एटम सेकंड पॉइंट जीबी तो लिखि देला एति को म बे इरेज कर दोछि. So next point mu lekhuchi. So electrons are revolving around the. So next point hela it is the only electron which is responsible for charging. ता माने कोन मु कहली एक इलेक्ट्रॉन केवल चार्जिंग पे रेस्पोंसिबल. ता माने कोन तो मोर एठी एनी एलिमेंट धर मु सोडियम कहूची एग्जांपल हम केमिस्ट्री को जीवानी खाली गोटे एग्जांपल मु दउची तुमको. तो सोडियम मु कहली सोडियम रे मोर कोन अछि 11 टा इलेक्ट्रॉन अछि 11 टा प्रोटॉन अछि 11 इलेक्ट्रॉन अछि 11 प्रोटॉन अछि. जदि बाय एनी मींस आ देर गोटे 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हे गला बाय एनी मींस यदि गोटे इलेक्ट्रॉन माइनस हे गला सो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हे गला ताहाले एठी कोन रहइबो ना एने 10 टा इलेक्ट्रॉन रहइबो 11 टा प्रोटॉन रहइबो 10 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन रहइबो सोडियम रे 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन. ताले अधिका कोन रहिला प्रोटॉन अधिका रहिला. ए जो 10 टा इलेक्ट्रॉन 10 टा प्रोटॉन को बैलेंस करि परिबो किंतु आउ गोटे जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन रहिला से कोन हे जिवो आउ ये एने रहिबोनी एने चार्ज हे जिवो कोन हे जिवो Na+ हे जिवो
ता माने मु कोन कहली इट इज ओनली द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रेस्पोंसिबल फॉर चार्जिंग। तो मु कोन कहबी एठो जदी सोडियम गोटे माइनस हे गला गोटे इलेक्ट्रॉन, सोडियम गोटे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देला से पॉजिटिव चार्ज हे जिवो। एबे चार्जिंग कोन बुझी पाइलो? चार्जिंग माने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बेसिकली। तो इलेक्ट्रॉन आइदर जीव नले इलेक्ट्रॉन आसीबो। सेति पई मु कहली इट इज द ओनली इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज रेस्पोंसिबल फॉर चार्जिंग। नेक्स्ट ता माने कोन? जदि इलेक्ट्रॉन जाउछि ताले को चार्ज हबो? पॉजिटिव चार्ज। जदि इलेक्ट्रॉन आसीबो ताले नेगेटिव चार्ज। धर मु कहली क्लोरीन, क्लोरीन रो 17 अछंती, 17 एटॉमिक नंबर, ता माने 17 इलेक्ट्रॉन अछि आ 17 प्रोटॉन अछि। ठीक अछि। जदि बाय एनी मींस +1 इलेक्ट्रॉन हे गला ताले क्लोरीन कोन हे जिवो? क्लोरीन रहिला, क्लोरीन रे रहइबो 18 इलेक्ट्रॉन आ 17 प्रोटॉन, ताले क्लोरीन कोन हे जिवो? Cl- हे जिवो। ता माने आइदर सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो पॉजिटिव चार्ज हेबा पई, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिवो नेगेटिव चार्ज होबा पई। ता माने पॉजिटिव चार्ज माने कोन? ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवा, आ नेगेटिव चार्ज माने कोन? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिवा। ता माने आइदर गोटे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करि परिवो नले एक्सेप्ट करि परिवो। जदि डोनेट करूची ताहले पॉजिटिव चार्ज, जदि एक्सेप्ट करूची ताहले नेगेटिव चार्ज। बुझी हैला? ता माने व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर चार्जिंग। इफ an atom donates electron, if an atom donates electron, it becomes positively charged, and if accepts electron, जदि इलेक्ट्रॉन accept करूची then it becomes accepts electron, then it becomes negatively charged। तो बुझिएला गोटे ला पॉजिटिवली चार्ज आ गोटे ला नेगेटिवली चार्ज। ओके, सो इलेक्ट्रॉन दब जदी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नब जदी नेगेटिव। ओके, सो एडा बुझी पाइलो? इट इज ताहाले जदि मु गोटे इलेक्ट्रॉन पळेला बा गोटे इलेक्ट्रॉन आसीला खाली इलेक्ट्रॉन ही रेस्पोंसिबल चार्जिंग पई, ताले गोटे फंडामेंटल चार्ज होची कोन? फंडामेंटल चार्ज ला सेही चार्ज जोटी गोटे इलेक्ट्रॉन नो चार्ज। तो लिखिबा तो चार्ज अपॉन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज of an electron is called elementary charge, or fundamental charge, so बुझियला एटा ना बुझियला नहीं तो गोटे इलेक्ट्रॉन नो चार्ज आई परिबो केबा आसी परिबो ताहाले इलेक्ट्रॉन नो चार्ज केते तो 1 इलेक्ट्रॉन नो चार्ज को मु कहूची फंडामेंटल चार्ज। तो एबे लिखि देला पॉज कर दे लेखा एटा तो टिके थ्योरी अछि तापरे हमें कांसेप्ट को जीवा तो ए थ्योरी जान ले हमें कांसेप्ट को जाई परिबा। तो जदी लेखिनो पॉज करी लिखि दे मु इरेज करूची एबे मु इरेज कर दोची। तो मु कहली चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एलिमेंटरी चार्ज और फंडामेंटल चार्ज। ताले केते ना चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तमे जानि थिबो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू केते 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। चार्ज रे यूनिट में कूलम बेले पड़िबा तो मु चार्ज रे यूनिट परे पड़िबा किंतु 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हला 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। बुझी पाइला के डिस्टर्ब होबनी लेखि चलिबो सब बुझिला देखि। तो मु कहली गोटे इलेक्ट्रॉन चार्ज हला फंडामेंटल कारण सेही हे जाई परिबो आउ के जाई परिबेनी। ओके तापर नेक्स्ट ताहाले आमे कहूचु गोटे इलेक्ट्रॉन जाउची किबा इलेक्ट्रॉन आसुची सेइटा ही होची चार्जिंग। अच्छा प्रोटॉन काहे की जाउनी कि कहबो प्रोटॉन काहे की जाउनी
ना प्रोटॉन न जीवार कारण होची एक रे तो प्रोटॉन न्यूक्लियस भितर रहिला तापरे प्रोटॉन मास बहुत अधिका तो गोटे 50 किलो ओजन पिला जोरे दौड़ी पार ना 500 किलो ओजन पिला जोरे दौड़ी पार सो 50 किलो ओजन पिला जोरे दौड़ी पार सो इलेक्ट्रॉन मास बहुत कम आ प्रोटॉन मास बहुत अधिका से आम कनसेप्ट सब बेले कहूँ जे प्रोटॉन आमर जाई पारिबो नाही कहीं ना तार मास अधिका तो से आम लिखा इट इज only the electron which moves. It is only the electron which moves. Proton does not move. Because proton does not move. Because the mass of the proton is very high. Mass of the proton is very high in comparison to the mass of the electron. In comparison to the mass of the electron. So approximately 1837 times high. Okay, so mass of proton is great. How much? 1800, approximately 1837 times high than mass of electron. Mass of proton केते? तो mass of proton हमें देखिबा. Mass of proton मन रखिबा ए तीनटा चारटा very important. Charge of electron is 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. The mass of proton and mass of electron. Mass of proton is 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. And mass of electron, eta bhi likhiba pura. Mass of electron is approximately equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. So mass of proton is high. So charge of electron mu कहले 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Charge of proton भी सेतिकी. Charge of proton this is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So एटा को माइनस निये एटा को प्लस निये. ओके तो माइनस एटा को मास ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन. एती क्लियर हैला ना कार डाउट अछि भाबु जे एती क्लियर हेतियो बेसिक कांसेप्ट. प्रोटॉन मोरा मूव करेनी काहे कि ना प्रोटॉन रो मास का अधिका जहार मास अधिका से मूव करि परिबो नाही आ प्रोटॉन टा मोर न्यूक्लियस भीतर अछि. एती की कांसेप्ट जानलो. एती की जदी चार्ज विषय ताले बेसिकली मु एई चारटा जिंस माने रखिबो वेरी वेरी इंपोर्टेंट सब बेला पई. ओके इंटर 12th रे पई एई चारटा जिंस माने रखिबो तमे. जदी हे गला मु इरेज कर दोउची एटा लिखि दिया. ओके सो एती की बेसिक पॉइंट्स अबाउट द चार्ज बा ताकू कहउचंती इलेक्ट्रॉन थ्योरी. मु खाली मते कोन माने रखियार अछि ना गोटे ऑब्जेक्ट जे कोनोसी ऑब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट केतबेले चार्जिंग हबो ई धर ए मार्कर हैला ए मार्कर केतबेले चार्जिंग हबो ना जेतबेले ता देर इलेक्ट्रॉन जीवो किंबा इलेक्ट्रॉन आसीबो. ठीक अछि तो आगुरो आदिरे जेतिक इलेक्ट्रॉन सेतिक प्रोटॉन अछि तेनु न्यूट्रल अछि. जेतबेले मोर इलेक्ट्रॉन जीवो किंबा इलेक्ट्रॉन आसीबो जेतबेले इलेक्ट्रॉन जीवो से पॉजिटिव हबो जेतबेले इलेक्ट्रॉन आसीबो से नेगेटिव हबो. एतिके बेसिक कांसेप्ट हमर मन रहिबा दरकार. आ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन एई चारटा जिंस मन रहिबा दरकार. तापरे मु जीबी चार्ज विषय रे आउ टिके पॉइंट्स को देखो. तो ता माने समस्ते माइंड रे निय इलेक्ट्रॉन जीवो किबा इलेक्ट्रॉन आसीबो. इलेक्ट्रॉन जदि जीवो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जदि आसीबो ताहले नेगेटिव चार्ज. ओके ताहले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हमें जीवा. प्रॉपर्टी चार्ज रो प्रॉपर्टी कोन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तापरे हमें जीवा चार्ज रो यूनिट चार्ज रो डायमेंशन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. ओके सो चार्ज रो प्रॉपर्टी हमें पढ़िबा कोन कोन प्रॉपर्टी अछि चार्ज रो. तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी नंबर 1 प्रॉपर्टी.
charge is a scalar quantity. Scalar quantity. Charge is a scalar quantity. It is added according to the algebraic addition. It is added according to the algebraic addition. According to the algebraic addition. It is added according to the algebraic addition. That means mu jodi add karibi +2 coulomb and -3 coulomb, so kete he jibo -1 coulomb he jibo. ठीक अछि, algebra +2 -3 -1 coulomb he jibo. ठीक अछि, +2 +5 +2 coulomb +5 coulomb ये +7 coulomb he jibo. ठीक अछि, scalar quantity आर डायरेक्शन नाही चार्ज रो. ठीक अछि. Then number 2. Okay, so number 2 is very important property, that is charge is conserved. Number 2, charge is conserved. In a system, total charge always remains constant. Conservation माने तुम 8 9 क्लास रो पढि आछो, जे कोनोसी conservation कहिबी. Conservation माने it can neither be created nor be destroyed. It always remains constant. Total charge in a system always remains constant. So that is the conservation of charge. So mu lekhuchi charge is always conserved. That means the total charge in a system, always remains conserved. It can neither be created nor be destroyed. It can neither be created nor be destroyed. Okay, so total charge always remains constant, so it can neither be created nor be destroyed. So is the properties of charge padila. The main property of charge I will tell you that. Okay, जदि एदिटा लिखि देला तापरे मु एटा लिखेबी अरे एबी लिखुची थर्ड प्रॉपर्टी. Third and most important property है quantization. So quantization of charge. Quantization of charge कौन? Quantization of charge कौन? तो quantization of charge माने suppose मु कहले एटा गोटे ऑब्जेक्ट, एटा गोटे आको मु चार्ज करेबी. चार्ज केमती करेबी? तो आइदर एटू इलेक्ट्रॉन मु 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करिबी और 1 इलेक्ट्रॉन प्लस करिबी. बुझियला? ठीक अछि. आको चार्ज करिबी माने आदर इलेक्ट्रॉन माइनस करिबी न इलेक्ट्रॉन प्लस करिबी. ता माने एटा चार्ज हे जिवो. तो क्वांटाइजेशन माने तो आइदर गोटे इलेक्ट्रॉन जीव न गोटे इलेक्ट्रॉन आसीबो. इलेक्ट्रॉन भांगी पारिबोनी. मु कहि परिबिनी एठी 1.5 इलेक्ट्रॉन जाउची कि एठी 2.5 इलेक्ट्रॉन आसुची. इलेक्ट्रॉन को मु भांगी पारिबी नाही. ऑल्दो एबे इलेक्ट्रॉन भांगी कि क्वार्ज आसिलानी ताडू स्मॉल पार्टिकल, बट मु एबे कहूची इलेक्ट्रॉन को भांगी पारिबिनी. आइदर गोटे इलेक्ट्रॉन जीव नले दुटा इलेक्ट्रॉन जीव नले तीनटा इलेक्ट्रॉन जीव. 1.5 इलेक्ट्रॉन जाई परिबोनी कि 1.5 इलेक्ट्रॉन आसी परिबोनी कि 1.25 इलेक्ट्रॉन जाई परिबोनी कि 1.25 इलेक्ट्रॉन आसी परिबोनी. सब बेले गोटे इंटीजर नंबर जीव आइदर 2 3 4 5 6 7 किछि इंटरमीडिएट वैल्यू हेई परिबो नाही. तो फॉर एग्जांपल तमे सीडी रे जाउछो स्टेप्स. ठीक अछि, एडा होछि स्टेप्स तमरो सीडी. तो तमे आइदर फर्स्ट स्टेप से रहउछो जाउछो नले सेकंड स्टेप से जाउछो. तमे कोन 1.5 स्टेप्स रे गोडो देई पारुछो कि देई परिबो नाही. तो आइदर स्टेप 1 और स्टेप 2. ता माने मो कहया कथा चार्ज ता सब बेले मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हबो आउ इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हबो. केबे फ्रैक्शन हेई परिबो नै. आउ चार्ज बढ़िबा बा कमिबो केमिति ना
by steps 1 2 3 4 5 number of electrons हे परिबो किंतु 1.5 number of electron हे परिबोनी 1.25 number of electrons हे परिबो नाही भाबुची बुझी पाइलो बोते फेल आसिला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कोन तो क्वांटाइजेशन चार्ज माने charge always increases in steps. Charge always increases in steps. Charge always increases in steps. Total charge on a body, total charge on an body is always an integral multiple of number of electrons, integral multiple of number of electrons. Total charge on a body is an integral multiple of number of electrons. जदि मु कहिबी गोटे बॉडी रू दीटा इलेक्ट्रॉन पळैला माने नेगेटिव गोटे इलेक्ट्रॉन चार्ज होची 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम दीटा इलेक्ट्रॉन केते हबो 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम बुझी हला मु भाबुची समस्तंकर क्लियरली तो एबे ए दीटा टिके लिवेई देबो तो ए दीटा भाबुची तमे लिखि देइथियो बेली ए गोटे लिवेई दोची ठीक अछि तो टोटल चार्ज को सब बेले मु कैपिटल क्यू किबा स्मॉल क्यू लिखुची तो लेट्स से कैपिटल क्यू सो टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस और माइनस n इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटा 12th रो मोर फर्स्ट फार्मूला q इज इक्वल टू प्लस और माइनस n e तो q एला कोन ना टोटल चार्ज q एला टोटल चार्ज n एला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and e एला चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एला प्रथम फार्मूला 12th रो तो q is equal to plus or minus n e n टा सब बेले इंटीजर हबो फ्रैक्शन हे परिबनी तो मु तम बुझिया पई एठी लिखि दउची n is always an integer n cannot be a fraction एटा तम बुझिया पई मु लिखि दउची n cannot be a fraction n फ्रैक्शन हे परिबो नाही n is always an integer बुझियला समस्तंकर एटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सीबीएसई रे पड़े शॉर्ट क्वेश्चन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज माने चार्ज सब बेले स्टेप्स रे इंक्रीज करिवो हाउ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हबो ए तीनटा होची बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मु भाबुची तुम चार्ज रो प्रॉपर्टी बुझी पारले बेली अच्छा जदी किछि डाउट्स अछि कमेंट्स करिवो तो चार्ज विषय बुझियला ठीक अछि एबे चार्ज रो यूनिट विषय टिके जानिबा आउ चार्जिंग विषय जानिबा ओके क्यू थिबो हे परिबो कि कैपिटल क्यू भी हे परिबो तो चार्ज कैन बी नोटेड कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू ओके सो नाउ चार्ज रो यूनिट कोन हमें जिबा चार्ज रो यूनिट होची कूलम unit of charge है हमारा कूलम charge is coulomb c unit of charge is coulomb c तो एबे डायमेंशन चार्ज रो देखिबा चार्ज स्केलर क्वांटिटी मु ऑलरेडी कहि सारी छी तो डायमेंशन ऑफ चार्ज सो कोन हबा ना q तमे जानि छ स्कूल रु i तमे जानि छ करंट i इज इक्वल टू q by t
तो q कोन हे जिवो I into t current into time so q is equal to current I into time okay so current जदि मु डायमेंशन कहबी चार्ज रो तो q रो डायमेंशन कोन हबो current is a fundamental quantity तो ताकू मु a लिखि परिबी आ टाइम को t लिखि परिबी सो चार्ज रो डायमेंशन हला a into t चार्ज रो यूनिट हला कूलम चार्ज रो डायमेंशन हला a into t क्लियर पूरा बुझियला तो एबे कॉपी कर दियो तो मु आपको लिबे दोची पॉज करके कॉपी करनियो अच्छा मोर फर्स्ट फार्मूला 12th रहला बा प्लस सेकंड ईयर रहला q is equal to plus or minus ne एबे गोटे एग्जांपल मु करौची तापरे मु जीबी हाउ टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट तो एग्जांपल गोटे लेखा फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन find the number of electron present in 1 coulomb of charge electron present in 1 coulomb of charge 1 coulomb of charge find the number of electrons present in 1 coulomb of charge गोटे कूलम चार्ज रे केतेटा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अछंती तो हमको कैलकुलेट करियर अछि तो तमे फर्स्ट पॉज करके ट्राई करो तापरे मु देख कहूची सॉल्यूशन तो मु कहली मोर फार्मूला हला टोटल चार्ज q is equal to plus or minus a n e सो वेयर हमको कोन बाहर करे को देछि q देछि टोटल चार्ज हला 1 कूलम तमे ई जानिछ 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम an पचार केतेटा इलेक्ट्रॉन अछंती सो दैट इंप्लाइज टोटल चार्ज q देछि q is equal to plus 1 कूलम सो प्लस n लिखिबी 1 कूलम प्लस जेतो टोटल प्लस 1 कूलम एडी प्लस नेबी प्लस n into e is your 1.6 sorry e is your 1.6 into 10 to the power minus 19c okay so what is n then so that implies n is equal to 1 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 n is a number and how much number it is so it is 6.25 into 10 to the power 18 10 19 16 yeah 10 to the power 18 1 by 16 into 10 to the power 19 okay or 6.25 into 10 to the power 18 6.25 into 10 to the power 18 okay so now so मु कोन कहली तो गोटे कूलम चार्ज पाई ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हला 6.25 into 10 to the power 18 एटा गोटे बड़ नंबर ना छोटा नंबर पिला माने एटा गोटे बहुत बड़ नंबर तो गोटे कूलम चार्ज करिवा पाई कि मोर एतिकिटा इलेक्ट्रॉन दरकार एटा गोटे बहुत बड़ अमाउंट रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दरकार तो मु कहि परिबी ताहले कूलम इज ए वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज Coulomb is a very big unit of charge. Very big unit of charge. काहे की charge? Why? Charge. Why? Because to get 1 coulomb of charge, मतलब 1 coulomb charge पाइबा पाई एते के इलेक्ट्रॉन मोर either donate हवा दरकार नले accept हवा दरकार. So why not to get 1 coulomb of charge we need to donate or accept 6.25 into 10 to the power 18 number of electrons सो एसआई यूनिट जो कूलम कहली से बहुत बड़ा यूनिट चार्ज बुझी पाला पिला माने पूरा क्लियर हैला तो काहे कि
ना एति के इलेक्ट्रॉन मोर दरकार जो थरे कि डोनेट हवा दरकार कि एक्सेप्ट हवा दरकार मोर 1 कूलम ऑफ चार्ज हवा पाइन की ए कांसेप्ट क्लियर हैला पिला माने एटा छोटिया एग्जांपल थिला छोटिया क्वेश्चन गोटे थिला ओके जदि क्लियर हो गला एबे पॉज करी लिखि दियो ओके सो फाइन मते इरेज लेट मी इरेज इट तापरे मु चार्ज विषय हम एते जानिला परे मु कहिबी गोटे ऑब्जेक्ट बा गोटे बॉडी को केमिति चार्जिंग करिवो हाउ टू चार्ज एन बॉडी और हाउ टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट हाउ टू चार्ज एन बॉडी और हाउ टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बुझेला पिला माने तम गोटे ऑब्जेक्ट को केमिति चार्ज करिवो बेसिकली तीन प्रकार करि परिवो तो गोटे हैला फर्स्ट देखो how to charge an object how to charge an object or body how to charge an body how to charge a body or how to charge an object number 1 लिखो 3 we can charge an object or body by three types we can charge an object number 1 हैला by conduction number 2 हैला by induction number 3 हैला by friction तो कंडक्शन कौन इंडक्शन कौन और फ्रिक्शन कौन तो फर्स्ट हैला कंडक्शन हैला इन ब्रैकेट रे मु लिखुची बाय टचिंग सो इंडक्शन हैला विदाउट टचिंग फ्रिक्शन हैला बाय रबिंग सो आई विल टेल यू व्हाट आर दे एटा कोन मु कहिबी तो फर्स्ट हैला बाय कंडक्शन माने कोन ना फर्स्ट हेडिंग करो बाय कंडक्शन फर्स्ट बुझो तापर लिखिबो सो बाय कंडक्शन नो माने कोन बुझो गोटे अनचार्जड ऑब्जेक्ट अछि एटा गोटे चार्जड ऑब्जेक्ट लेट्स से आ रे पॉजिटिव चार्ज अछि आदिर कोन अछि पॉजिटिव चार्ज अछि मु कोन करिबी आ गोटे अनचार्जड ऑब्जेक्ट आनिबी एटा मने कर बी अछि बी आदिरे किछि चार्ज नाही माने कोन ना जेते कि इलेक्ट्रॉन अछंती सेते कि प्रोटॉन अछंती बुझि पाइला जेते कि इलेक्ट्रॉन अछंती सेते कि प्रोटॉन अछंती केतेटा इलेक्ट्रॉन अछंती जेते कि इलेक्ट्रॉन सपोज 10 टा इलेक्ट्रॉन अछंती 10 टा प्रोटॉन अछंती मु जेते बेले आको छुईबी टच करेबी ता माने एठी प्लस चार्ज माने इलेक्ट्रॉन अधिका अछि ना कम अछि इलेक्ट्रॉन कम अछंती प्लस चार्ज माने मु इलेक्ट्रॉन डोनेट करि देछि इलेक्ट्रॉन कम अछि तो जेहेतु इलेक्ट्रॉन कम अछि ताले एठू एठी की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विल टेक फ्रॉम बी टू ए जदि एठू एठी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हे गला सपोज आदिरे 10 टा इलेक्ट्रॉन 10 टा प्रोटॉन थिले जदि आदिरो इलेक्ट्रॉन पळैला बी रु ए को ताले बी टा कोन हे जिवो पॉजिटिव चार्ज हे जिवो बी टा कोन हे जिवो बी टा पॉजिटिव चार्ज हे जिवो पूरा फील आसुची धर एठी 10 टा अछंदी गोटे इलेक्ट्रॉन पळैला कि 9 टा इलेक्ट्रॉन आ 10 टा प्रोटॉन रहिले तो प्रोटॉन अधिका रहिला तो पॉजिटिव चार्ज हे जिवो बी इज इट क्लियर ता माने जदि गोटे चार्ज ऑब्जेक्ट अछि आ गोटे अनचार्ज ऑब्जेक्ट को म ताको टच करेबी सपोज एटा चार्ज ऑब्जेक्ट एटा अनचार्ज ऑब्जेक्ट आको टच करेबी ताले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस जदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हबो एटे बी रु ए को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होउची कारण मु धर माने करे एटा पॉजिटिव अछि एटा नेगेटिव थिले ए रु बी को ही थांता बुझी पाछो ना ने अच्छा जदि बुझी पाइलो ताहाले एबे बी टा कोन हे जिवो मते को बी टा हे जिवो मोर को चार्ज पॉजिटिवली चार्ज एबे डायग्राम टा करो तो मु लिखुची कोन ता माने कोन मु लिखुची
नंबर 1 है by conduction. When a charged object is brought in contact रे आसीबो. Conduction है contact रे आसीबो by touching or in contact रे आसीबो. Uncharged object जो induction है touching हवनी. तो मु conduction पे लिखुची when a charged object is brought in contact with an uncharged object, then electron transfer takes place. कोड की जीव that depends upon को charge रो object अछि. Electron transfer takes place. And the uncharged object gets charged. Uncharged object charge ହେଇଯିବ. तो एडी टच करेली. एबे नेक्स्ट स्टेप रे कोन हबो? बी रो ए को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हे जाइतिबो. त माने ए टा भी रहिला. ए टा हेगला कोन? पॉजिटिव रहिला. बी टा भी कोन हेजिबो? बी टा भी पॉजिटिव हेजिबो. त माने जदि ए पॉजिटिव ताले बी भी पॉजिटिव हबो. इन कंडक्शन सेम चार्ज डेवलप. ए जोटा बी जोटा टच करबी से भी सेया हबो. तो सेटा गोटे कांसेप्ट लिखि दियो. इन कंडक्शन same charge develops on uncharged body. ठीक है, थ्योरी फर्स्ट क्लास का अनचार्ज्ड बॉडी. सो तमाने पेशेंस रे सहित देखिले आराम से बुझी पारिबो. गोटे घंटा रे पूरा चार्ज कांसेप्ट क्लियर हो तमरा. इन कंडक्शन सेम चार्ज डेवलप्स ऑन अनचार्ज्ड बॉडी. तो क्लियर हैला पिला माने. एबे जिबा कंडक्शन पळेला. कंडक्शन पूरा क्लियर हे गला. जो चार्ज जदि एटा नेगेटिव हे तांता बीटा भी नेगेटिव हे तांता. ओके फाइन. तापर नेक्स्ट मु इरेज कर दोची. नेक्स्ट जिबा कोन बाय इंडक्शन. एटा इरेज कर देली. तुम लिखो बाय इंडक्शन. इंडक्शन ने कोन करिवि मु आ टच करेबिनी. मु पाखु को आनिबि. पाखु को आनिले कोन हबो देखो. गोटे चार्ज ऑब्जेक्ट अछि बाय इंडक्शन. गोटे चार्ज ऑब्जेक्ट अछि. चार्ज ऑब्जेक्ट कोन हबो ब्रॉट नियर. तो एटा गोटे चार्ज देखो मु स्टेप बाय स्टेप करूची. एटा गोटे चार्ज ऑब्जेक्ट ए. एठी अछि पॉजिटिव चार्ज. ए रे अछि पॉजिटिव चार्ज. मु आ गोटे अनचार्ज ऑब्जेक्ट बी को आनिली. बी को नियर आनली. एटा हला बी. एटा हला अनचार्ज. बी को नियर आनली. तो नियर आनले कोन हबो एथिरे जेतिके इलेक्ट्रॉन अछंती सेतिके प्रोटॉन अछंती. जदि पाखो को आणुची ए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हे परिवनी. किंतु कोन हबो तो एथिरे जेतिके इलेक्ट्रॉन सेतिके प्रोटॉन अछंती इन रैंडम. सपोज जेतिके पांचटा इलेक्ट्रॉन पांचटा प्रोटॉन अछंती सेम अछंती. तो एबे कोन हे जीवो ए माने. तो ए पॉजिटिव जेहेतु अछि से इलेक्ट्रॉन गुडा को एपट साइड को नै आसीबो. ये आ पॉजिटिव प्रोटॉन गुडा को से एपट साइड को नै जीवो. दिस कांसेप्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन. पोलराइज्ड. बी पोलराइज्ड हे जीवो. पोलराइज्ड माने कोन चार्ज गुडा को प्लस माइनस एम सब रैंडम रे अछंती. ओके रैंडम रे अछंती. ओके जदि पोलराइज्ड हे जीवा माने इलेक्ट्रॉन गुडा को एपडो गोटे साइड को पळे आसीबा. गोटे चार्ज आ गोटे साइड को पळे आसीबा. जदि एटा नेगेटिव थांता ए प्लस गुडा एपडो पळे आस्तांता माइनस गुडा एपडो पळे आस्तांता. कांसेप्ट क्लियर हैला. ताले बीटा हे जीवा पोलराइज्ड. नियर नेले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हेइनी. त मु कदि नियर को नेली ताले ए पोलराइज्ड हे जीवो बी. नेक्स्ट स्टेप रे कोन हबो ये पोलराइज हे गला. पोलराइज हैला परे मोर ए अछि पॉजिटिव. ए एटा हला कोन ए अछि पॉजिटिव.
बी कौन है गला पोलराइज्ड अछि बी पोलराइज्ड माने माइनस 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 प्लस 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 तो एटा को मो आर्थिंग कनेक्शन करिवि पिला माने आर्थिंग माने आकु ने कि ग्राउंड रे कनेक्शन करिवि ग्राउंड तमे आर्थिंग जानिथिबो जो माने आर्थिंग विषय रे मु आउ टिके परे कहिबि बट तमे एते के जानि थाओ ग्राउंड रे नै के कनेक्शन कर देली ग्राउंड ता कोन ग्राउंड रे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड ता कहा जाए इलेक्ट्रॉन रो समुद्र तो ग्राउंड रे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अछनी जदि एई पाखे रे ग्राउंड देखिला गोटे पॉजिटिव चार्ज अछि ताले सीए कोन करिवो ग्राउंड रो इलेक्ट्रॉन आसी कि ए पॉजिटिव चार्ज गुडा को न्यूट्रलाइज करिवो ग्राउंड रो इलेक्ट्रॉन आसी कि ए पॉजिटिव चार्ज गुडा को न्यूट्रलाइज करिवो एटा ए एटा बी तार नेक्स्ट स्टेप रे कोन हबो तार नेक्स्ट स्टेप रे कोन हबो ए रहिबो एज इट इज पॉजिटिव ए रहिबो एज इट इज पॉजिटिव ए पर्यंत बी रे चार्ज आसीनी ए रहिबो पॉजिटिव किंतु एबे कोन हेइ जीवो जेतबेले म आर्थिंग कनेक्शन कर देली बी रे रहि जीवो कोन ना बी रे जेहेतु पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हे जाउची बी रे मोर हे जीवो नेगेटिव चार्ज हे जीवो ता माने ए रे पॉजिटिव रहिला बी रे कोन हे जीवो नेगेटिव हे जाइबो पूरा क्लियर हैला एबव इंडक्शन ता माने मु टच करिविनी I will not touch, I will just bring nearer, then polarization of charges will happen. If polarization of charges will happen, then if I will connect it to the ground, then electrons from the ground will come and neutralize the positive charges. Okay, clear? ताले जदि पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हे गला बॉडी के नेगेटिव चार्ज तो बी नेगेटिव हे जीवो एति केला इंडक्शन रा कांसेप्ट तो हमें लिखि दबा से गोटे दी लाइन रे कोन इंडक्शन रा कांसेप्ट वेरी इजी when I will bring when a charged object brought near an uncharged object when a charged object brought near an uncharged object, polarization takes place in uncharged object. CBSE पिलांकर एटा गोटे पढ़े how to charge an object by induction. When a charged object brought near an uncharged object, polarization takes place in uncharged object. Uncharged object. When the uncharged object is connected to ground, when the uncharged object जहाँ मु कहूची से लिखुची तमे निज लैंग्वेज रे लिखिबो when the uncharged object is connected to ground then electron from the ground neutralizes the positive charges and the uncharged object gets charged. Uncharged object gets charged. Okay, ता माने कौन हैला जदि ए पॉजिटिव अछि न्यूट्रल ये पोलराइज हे गला पर एटा ग्राउंड रे कनेक्शन कर देली इलेक्ट्रॉन पळेला एठी न्यूट्रलाइज हे गला तले ए जदि पॉजिटिव अछि बी नेगेटिव हे गला कंडक्शन रे कहितली सेम हबो ए जदि पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव हबो किंतु इंडक्शन रे ऑपोजिट चार्ज हबो क्लियर वेरी मच क्लियर इंडक्शन रे कोन हबो ऑपोजिट चार्ज डेवलप हबो in induction opposite charge developed totally खाता धरी की नोट्स बनेइबो ताहाले जाय कि पूरा कांसेप्ट क्लियर हबो गोटी इन इंडक्शन opposite charges develops on uncharged object
हे गला कंडक्शन इंडक्शन सरी गला पिला माने एबे जिबा फ्रिक्शन कंडक्शन इंडक्शन पूरा बुझी पारल कंडक्शन रे सेम चार्ज डेवलप हो इंडक्शन रे ऑपोजिट चार्ज डेवलप तो एबे एटा इरेज कर दोउची पॉज कर लिखि देइछु हम भाबुची ओके सो देन ना मु लिखिबी फ्रिक्शन बाय फ्रिक्शन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन तो कोन लिखिबी फ्रिक्शन नंबर 3 हैला बाय फ्रिक्शन बाय फ्रिक्शन सो बाय फ्रिक्शन कोन हो ना जेतेबेले गोटे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट आउ दीटा ऑब्जेक्ट जेतेबेले बेसिकली फ्रिक्शन कोथरे हुए बेसिकली फ्रिक्शन हुए इन्सुलेटर माना करे जते मु दीटा को रब करिवि दीटा को घसीबी तो दीटा को घसीबी ताहाले भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस दैट इज कॉल्ड रबिंग तो तमे जानिथिबो छोटो बेलु जदी हेयर रे तमे स्केल घसी देकी कागज टुकड़ा पाखु नै बसे कागज टुकड़ा अट्रैक्ट करे काहे करे तमे से तो मैजिक वे लिखुआ किंतु एक्चुअली कोन हुए चार्ज डेवलप हुए तो बाय फ्रिक्शन मींस बाय रबिंग मु कहितली रबिंग माने घसीबा by rubbing so when two objects are rubbed together then electron transfer takes place one object will acquire positive charge another will acquire negative charge very simple kiye positive haba kiye negative haba seta ame dekhiba when two objects are rubbed when two objects or two bodies when two bodies basically eta kahar huye insulator huye two bodies are rubbed together देखा होची इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस कोतर स्केल रे मुंडो रे घसिले आइदर हेयर रु स्केल को इलेक्ट्रॉन जीवो किबा स्केल रु हेयर को आसीबो बुझी होची पिला माने जदी हैला ताहाले गोटे पॉजिटिव हबो गोटे नेगेटिव हबो कोडा पॉजिटिव हबो कोडा नेगेटिव हबो मु एबे कहिबी टेक्स प्लेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस देन one body acquires positive charge and other gets negative charge good one is positive one body acquires a positive charge and other gets negative charge so कोन मु कहू देखो सपोज त कोटा पॉजिटिव हबा कोटा नेगेटिव हबा सेटा ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली हम कुआई छ हम खाली मने रखियार अछि बुझी हैला कोन कोन मने रखिबी जदी मु ग्लास रॉड संगे सिल्क क्लॉथ घसिली ग्लास रॉड संगे सिल्क क्लॉथ घसिली तो रॉड ग्लास रॉड पॉजिटिव हबा सिल्क हबा नेगेटिव तो मु केमिति जानिली ना गोटे तमे एनसीईआरटी रे गोटे सीरीज देइची सेटा देखो मु लिखुची फर्स्ट हला फॉर नंबर 2 हला फ्लानेल हला जो कंबल और मटेरियल फ्लानेल नंबर 3 हला वैक्स एडा फ्लानेल हला जो कंबल और घोड़ी होछ सेम मटेरियल वैक्स नंबर 4 हला पेपर नंबर 5 वाला तमरो ग्लास नंबर 6 वाला कॉटन ग्लास नंबर 6 वाला कॉटन नंबर 7 वाला तमरो सिल्क नंबर 8 वाला ह्यूमन बॉडी okay so number 9 hela wood then number 10 hela metals number 11 hela एमती बहुत गुडे अछि बट मु 10 12टा जानिबी रबर रेसिन इबोनाइट रबर नंबर 12 हला रेसिन नंबर 13 हला इबोनाइट एमती 10 12 13 टा मु मने रखिबी तो ए सीरीज रे जे जहा संगे रे घसिबो मु रब करिवि
फर्स्ट टा मोर पॉजिटिव हबो सेकंड टा नेगेटिव हबो ता माने यदि फॉर संगे फ्लानेल घसिली ताहले कोन हबो फॉर टा पॉजिटिव फ्लानेल टा नेगेटिव ग्लास संगे सेल घसिली ग्लास संगे सेल घसिली ताहले ग्लास टा पॉजिटिव सेल टा नेगेटिव ता माने मु लिखि दउची द अर्लियर इन दिस सीरीज gets positively charged and the latter gets negative charge तो माने मु कहली अर्लियर जदि सपोज एग्जांपल कहबी ग्लास और सिल्क example if glass and silk are rubbed glass will become positive and silk will become negative so this is experimentally found we will not do anything मते पड़िबो ग्लास संगे सिल्क घसिले कोडा पॉजिटिव हबो कोडा नेगेटिव हबो जदि मु ग्लास संगे रबर घसिली ग्लास टा पॉजिटिव रबर टा नेगेटिव मेटल संगे रबर घसिली मेटल टा पॉजिटिव रबर टा नेगेटिव भाबुची क्लियर हे जो एति की फ्रिक्शन बुझियला पिला माने फ्रिक्शन तो एति के रे हमर चार्ज कांसेप्ट शेष हैला आ गोटी खाली छोटिया नोट्स कहि साइला परे चार्ज एंड करबी तमे 50 टू 55 मिनिट्स ऊपर गोटे कांसेप्ट चार्ज रिलेटेड कांसेप्ट तुम्हारे क्लियर हबो नेक्स्ट टाइम आसीगा फोर्स रिलेटेड कांसेप्ट को आउ चार्ज रिलेटेड कांसेप्ट रो गोटे दिटा प्रॉब्लम करिबा ओके सो फर्स्ट है हमरो गोटे सिंपल नोट कहि की एंड करिबी जदि मोर चार्ज ट्रांसफर होउची सेथिरे मास ट्रांसफर होउची कि नाही चार्ज हेले मोर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हैला इलेक्ट्रॉन गोटे ऑब्जेक्ट रो आ गोटे ऑब्जेक्ट को जाउची ए रो बी को इलेक्ट्रॉन गले ए रो मास कोन हबो ए रो मास कमी जीवो कारण इलेक्ट्रॉन भी छोटो मास किंतु इलेक्ट्रॉन रे भी मास अछि तेनु जेहेतु इलेक्ट्रॉन जाउची किबा इलेक्ट्रॉन आसुची ताले मास बढ़ी जाई परिबो किबा मास कमी जाई परिबो बुझियला पिला माने ना बुझ पाइलोनी धर एठी मोर 10 टा इलेक्ट्रॉन अछि गोटे इलेक्ट्रॉन पळेला 9 टा इलेक्ट्रॉन रहिला ऑब्वियसली मास मोर कमी जीवो ता माने सो मु लेखुची लेख चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट एटा गोटे क्वेश्चन बेले बेले छोटो छोटो क्वेश्चन नीट रे बेले बेले पड़े चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट is also associated with mass transfer however it is very small but associated with mass transfer okay in positive charge electron ta jibo na asibo electron ta jibo tale mass ta kamibo in positive charge mass decreases mass कमी जीवो in negative charge mass increases कारण इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हबो mass increases बुझियला पिला माने ना कार डाउट अछि तो एतिकी चार्ज ऊपर एतिकी कहि कि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड हबो सेतिरे हमर फोर्स विषय रे हमें पढिबा तो थैंक यू।